Okay, so okay, 1 minute. Let me share my screen so that you can see the slides. Slides are available for you, right? I already sent the slides, so I guess those slides are available for you. So okay. Okay. So mm, mm, the quiz for this session is already available. So okay, let's start with the session. So what did we learn in the last class? Do anyone remember what we learned in the last class? सर, आप हिंदी में बात करो ना। हमें आपकी हिंदी समझ आएगी। हमें इंग्लिश कुछ भी नहीं समझ रही। Right now I am audible, right? Okay. Yes, sir. Okay. So yeah, I'll share my screen. Sorry for the inconvenience. About to share screen. Where I have screen. Okay. Mm, Okay. So today we are going to learn about accountability. So this is our part 6. So in last classes we learned about in starting classes communication और बाकी वगैरह topic, how to conflict resolution. हाँ बोल सानिया बोल. सर, आप हिंदी में बात करो। मुझे थोड़ी सी भी इंग्लिश नहीं आती। हाँ ठीक है और ठीक. आप I'll try it. आप Okay. मेरे बच्चे को भी। Okay, so in this class, what I planned is that I'll tell in both Hindi and English. ठीक है. So मैं नोट्स प्रिपेयर किया और उसमें हिंदी भी है. So I'll say that in Hindi too. ठीक है. Okay, okay, ठीक है. So ये आज का टॉपिक अकाउंटेबिलिटी है. So ये ओके ठीक है. सो ये एक डिक्टेटिव केस की तरह दिखाया गया है और मिशन है ये है कि सिर्फ किसने किया नहीं बल्कि कौन जवाब देगा ये समझो. ठीक है. और ओके. सो हाँ हमारा आज का टॉपिक अकाउंटेबिलिटी है. तो हाँ बाकी इधर on the bottom and all there are some writings, right? So just go through those writings and all. So I have made some extra writings so that you can go through. ठीक है. वो बहुत important नहीं है. बाकी slides के अंदर what all things are inside the slides वो
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ठीक है। सो अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है? इधर एक्शन और आंसर है। इसमें क्या है अकाउंटेबिलिटी? सो अकाउंटेबिलिटी दोनों है, एक्शन और आंसर है। और अकाउंटेबिलिटी का दो पार्ट है। पहले पार्ट आंसरेबिलिटी है। आंसरेबिलिटी मतलब क्या है? एक्सप्लेनिंग योर एक्शन। एक्शन एक्सप्लेन करेगा। सो इफ यू आर एक्सप्लेनिंग द आंसर, दैट इज कॉल्ड आंसरेबिलिटी। सो अकाउंटेबिलिटी का पहले पार्ट आंसरेबिलिटी है, और उसका दूसरा पार्ट, इधर इधर देख। इधर अकाउंटेबिलिटी इज नॉट जस्ट डूइंग द टास्क, इट इज ऑनिंग द रिजल्ट। मतलब क्या है? इट इज नॉट जस्ट डूइंग द टास्क, while doing the task we are owning the result। मतलब क्या है? that result is the result means what do you say? So हाँ, so if there is something, we are taking the ownership of that thing, that is accountability। so accountability का दो पार्ट है, answerability और culpability है। so answerability मतलब तुम्हारा एक्शंस एक्सप्लेन, सो एक्सप्लेनिंग योर एक्शंस। और कल्पबिलिटी मतलब क्या है? एक्सेप्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस। सो इफ देयर इज समथिंग, इफ समथिंग हैपेंड, देयर विल बी सम एक्शंस एंड देयर विल बी व्हाट, कॉन्सिक्वेंस विल आल्सो बी देयर, ठीक है। सो सो अकाउंटेबिलिटी का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, मतलब है रिजल्ट को ऑन करना, ऑन करना है। और इसके दो पार्ट्स है, आंसरेबिलिटी। आंसरेबिलिटी मतलब क्या है? अपना एक्शन एक्सप्लेन करना। और दूसरा पार्ट कल्पबिलिटी है। कल्पबिलिटी मतलब अगर गलती हो जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस एक्सेप्ट करना, ठीक है। सो सिंपल लाइन में, काम तुमने किया तो रिजल्ट भी तुम्हारा, वो है अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग, ठीक है। सो हाँ, ठीक। सो इधर दो पॉइंट है। पहले पॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और दूसरा पॉइंट अकाउंटेबिलिटी है। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स डूइंग द टास्क, और अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है? एक्सप्लेनिंग द रिजल्ट, ठीक है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी का नीचे द ड्यूटी। ड्यूटी मतलब क्या है? काम। सो वो एक्सप्लेन, रेस्पॉन्सिबिलिटी का नीचे ड्यूटी है। ड्यूटी मतलब क्या है? ऑब्लिगेशन टू एक्ट और डूइंग द टास्क। और अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? एक्सप्लेनिंग द रिजल्ट, द आंसर है। So obligation to explain the result, the signature. So I'll give a simple situation. If you are going for anything, if you are going for a trip and all, we'll make a to-do list. To-do list मतलब क्या है? We'll say we need to take the dress, और बाकी we need to take some money, we need to have tickets, वो passport, we need to take passport, वो that things are to-do list, वो है ड्यूटी, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है? आंसर। आंसर मतलब ऑब्लिगेशन टू एक्सप्लेन द रिजल्ट, ठीक है। और ये ओके। सो हाँ, सो रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम काम करना और टास्क कंप्लीट करना। और अकाउंटेबिलिटी मतलब क्या है? रिजल्ट के लिए जवाब देना, ठीक है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे सकते हो, पर अकाउंटेबिलिटी किसी और को नहीं दे सकते, ठीक है। और एक एग्जाम्पल है, टीचर काम असाइन करता है, पर प्रिंसिपल ओवरऑल रिजल्ट के लिए अकाउंटेबल होता है। अंडरस्टूड? ठीक है। ओके। सो या ओके, the detective's toolkit: 3 ways to judge right and wrong। So to judge whether something is right or wrong, we have 3 different ways। एक minute. Okay. If my voice is not audible or something, just tell me, because I can't see this because I am changing my screen, right? So just tell me or raise your hand so I'll come back. Okay. Okay. And if you have any doubts, you can either message in the messaging box, or you can just raise your hands. Feel free to talk. There is no problem. Okay. Okay. So detective's toolkit: 3 ways to judge right and wrong। So is the scale। Because स्केल मतलब क्या है? फोकस ऑन कॉन्सिक्वेंसेस। फोकस ऑन कॉन्सिक्वेंसेस मतलब डिड इट हेल्प मोस्ट ऑफ द पीपल। सो स्केल यूटिलिटेरियन। यूटिलिटी मतलब तो पता है ना यूटिलिटी। सो
next result or the consequence itself. So focus on consequence. So, and the question we should ask ourselves is, did it produce the best result for most of the people? And दूसरा, the rule book और rule book का ड्यूटी क्या है? फोकस क्या है? फोकस ऑन ड्यूटी एंड रूल्स. एंड यू हैव टू ask yourself a question that did you follow the rule. And third one मतलब क्या है? The badge. So in that badge we should focus on our character. So scale में we should focus our consequences. Rule book में because we should focus on your duty. और badge में you should focus on your character. So were you honest and brave? Were you a good person? Do you act like a good person? So वो है what हमारा character. So bad. So these three are the correct way to judge whether someone is right or wrong. So yeah. So right या wrong decide करने के तीन तरीका है. और पहले यूटिलिटेरियन और द स्केल, सबसे ज्यादा लोगों का फायदा हुआ क्या. ठीक है. और सेकंड वन डियोनोलॉजिकल. डियोनोलॉजिकल मतलब रूल बुक का दूसरा नाम है, रूल फॉलो किया क्या. और थर्ड वन द बैड्ज virtue ethics I'll teach you what ethics are. So virtue ethics. और इसमें क्या तुमने एक अच्छे कैरेक्टर वाले इंसान की तरह बिहेव किया. So ये है तीन क्वेश्चन. So you should ask yourself, means ask in your mind that whether are we asking, are we judging in the right way. ठीक है. एक एक्शन सही है या नहीं, ये तीन एंगल से देख सकते हैं. ठीक है. ओके. राइट. सो हाँ. सो हु आर वी आंसरेबल टू, हम किसको आंसरेबल है. A good detective checks all four direction. Up direction is hierarchical, answering to the boss, chain of command. Conscience. Out, legal or social. Legal or social मतलब क्या है? Answering to law and society. और down, political, answering to citizens or voters. So what is this thing? So हाँ. So if we are in at the center, in our upper position, boss will be there or seniors will be there. So out out matlab legal or social, means if you are at the center, there will be people around us. So इसमें कुछ लोग hierarchical है और boss वगैरह है. और some people will be, means the normal people, social people or legal people. So those law and society, answering to the law and society is out. Up matlab hierarchical, boss, chain of command and what. And इन मतलब आंसरिंग टू कॉन्सिक्वेंस. आंसरिंग टू कॉन्सियंस मतलब क्या है? कॉन्सियंस का हिंदी वाक्य अंतरात्मा है. सो हाँ. सो आंसरिंग टू कॉन्सियंस. और डाउन पॉलिटिकल. पॉलिटिकल मतलब सिटीजन्स और वोटर्स. ठीक है. और हाँ. सो हम फोर्थ डायरेक्शन में अकाउंटेबल होते हैं. इसमें अप डायरेक्शन मतलब बॉस या सीनियर्स को, आउट में लॉ और सोसाइटी को, डाउन में सिटीजन्स या वोटर्स को, और इन में अपनी कॉन्शियंस, अंदर की आवाज को. ठीक है. मतलब सिर्फ बॉस को खुश करना इनफ नहीं है, अपनी कॉन्शियंस भी सेटिस्फाई होनी चाहिए. ठीक है. ओके. सो हाँ. This one is the many hands mystery. What is the many hands mystery? So, huh, in large organization and all, many people are involved, right? So if it is a big company and all, many people are involved. Or if everyone shares the responsibility, sometimes no one feels responsible. Okay. So the dilemma means problem, confusion. So in large organization, many people will contribute to a single decision. Problem क्या है? If everyone is responsible, means everyone contributes something to decision, no one is responsible. मतलब क्या है? Everyone is responsible, then no one is responsible. It is like, it doesn't make sense. But the thing is that if everyone contribute, no one did will not, means no one will not take the full what means full, what is it, a full accountability of that situation, right? So no one will be actually responsible, although everyone is somewhat responsible. ठीक है. So इसमें risk क्या है? Individuals hide in the crowd to avoid blame. So people will hide in the crowd. मतलब everyone
contributed something. So no one will have means much problem means what do you say much accountability. So everyone will try to hide in the crowd. ठीक है. इसमें solution क्या है? Identify blameworthiness, who was in charge, and liability, who is at fault. ठीक है. Blameworthiness मतलब who was in charge of doing that thing, and liability, who is at fault. ठीक है. हाँ या. सो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग मिलके डिसीजन लेते हैं. प्रॉब्लम ये होती है अगर सब रिस्पॉन्सिबल है तो कोई भी सीरियस नहीं होता. सो प्रॉब्लम सो दैट इज द प्रॉब्लम. इफ एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल, अगर सब रिस्पॉन्सिबल है तो कोई भी सीरियस नहीं होता. लोग क्राउड में चुप जाते हैं ब्लेम से बचने के लिए. ठीक है. और इसमें सोल्यूशन क्या है? क्लियर करो कौन इंचार्ज था और कौन लीगली रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. ओके. सो हाँ, ये एक सो इन दिस जर्नी वी आर डिटेक्टिव्स, राइट. सो ये हमारा पहले केस और फील्ड इन्वेस्टिगेशन है. साइलेंस सबमराइन यूएसएस ग्रीनविल केस. ठीक है. सो या. So a submarine accident. So I'll read this at first. February 9, 2001 incident है. US Greenville collided with a fishing boat causing loss of life. Suspect Commander Scott Waddell. He did not steer the ship personally. Steer मतलब क्या है? Turn. And verdict. Blameworthiness in hierarchies. Accountability is based on status. Waddell accepted full accountability because it happened on his watch. Lesson: you are answerable for your command even if you didn't do the physical act. ठीक है. So one submarine accident happened, and commander's name is Scott Waddell. Scott Waddell did not personally drive the submarine. He did not personally drive the submarine. But the thing is that he accepted accountability because he was in charge. He was at the top, right? So he should accept the accountability. So इसमें lesson क्या है? If you are the leader, you are accountable. ठीक है. So हाँ. सो एक सबमरीन एक्सीडेंट हुआ और कमांडर ने पर्सनली शिप नहीं चलाया था. फिर भी उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट किया. ठीक है. क्योंकि वो लीडर वो लीडर थे. सो इसमें लेसन क्या है? लीडर होने का मतलब है फाइनल अकाउंटेबिलिटी तुम्हारी. ठीक है. ओके. सो ये दूसरा केस है. द 2.9 मिलियन कॉफी. सो I'll read this at first. Stella Liebeck suffered third degree burns from McDonald's coffee. Coffee was served at 180 to 190 degree Fahrenheit. Degree Fahrenheit is, I guess, you guys know, right? What degree Fahrenheit is? Degree Celsius is there, Kelvin is there, degree Fahrenheit is there. Kelvin is the standard way to measure temperature. So ये डिग्री फ़ारेनहीट है. बॉडी टेम्परेचर एंड ऑल आर मेजर्ड इन डिग्री फ़ारेनहीट. सो डेंजरस टेम्परेचर है 180 to 190 डिग्री. 700 प्लस 700 प्लस प्रायर कंप्लेंट्स इग्नोर्ड. So McDonald's ignored 700 prior complaints. So verdict क्या है? Liability. The company's policy created unreasonable risk. Lesson: accountability forces organization to change unsafe habits. So इसमें a woman was badly burned by very hot coffee. So the company ignored the previous complaints. They ignored every previous complaints, and the company was, so what was the after effect? The company was liable because their policy was unsafe. So their policy was unsafe means selling coffee at such a high temperature is not acceptable, right? So there might be some problem, and if it fall or if someone cause burn, just like stellar labor, they'll be means third degree burn. So first degree is the normal burns. Second degree is some more harmful. Third degree is very harmful. Means it will be very painful. So if they are having third degree burns and all, it is not acceptable, right? So so the what lesson did we get from this thing? Accountability forces change. ठीक है. सो हाँ. सो एक लेडी को बहुत गर्म कॉफी से बर्न्स हुई और कंपनी को पहले से कंप्लेंट्स मिल चुकी थी. फिर भी उन्होंने चेंज नहीं किया. सो कोर्ट ने कहा कंपनी लायबल है. सो कंपनी इज लायबल. सो इधर लायबिलिटी है. सो वी हैव told two things, right? Blameworthiness and liability. Either blameworthiness
हेल्थीनेस की एक ठीक है. सो मैकडोनल्ड्स, फ्रॉम दिस मैकडोनल्ड्स थिंग, द लेसन वी लर्न इज दैट अगर अनसेफ पॉलिसी बनाते हो तो जवाब देना पड़ेगा. ठीक है. ओके. सो सो ये थर्ड केस है, पाइप सबोटेज केस. ठीक है. पाइप सबोटेज केस. ओके. So villages broke new. So I'll read the incident. New water pipes for a town crossed a rural village. Villagers intentionally broke the pipes. Investigation. Planners ignored the rural villagers who watched clean water flow past their dry home. Social irresponsibility. The project failed because stakeholders were ignored. If your actions harm or ignore the community, you must answer for it. So I'll explain this thing. So villagers broke new water pipes. New water pipes were laid. Villagers broke those new water pipes. Why? Because they were ignored in the planning. So the water was only served to the town, not to the normal areas. So they were ignored in the planning. Okay. So that is why they broke the pipes. Okay. Okay. So हाँ. सो इसमें वर्डिक का है, वर्डिक क्या है, सोशली इररेस्पॉन्सिबिलिटी. सो इस सोशल इंटेलिजेंस कोर्स में व्हाट वी आर लर्निंग टू बी ए सोशली रिस्पॉन्सिबल पर्सन. So is this planning was socially irresponsible because they only gave for the town people, not the village people. So इसमें लेसन क्या है, ignoring people creates problem. ठीक है. Ignoring people creates problem. So so हाँ. ओके. सो गांव वालों ने पानी की पाइप तोड़ दी. क्यों? क्योंकि उनको प्लानिंग में इंक्लूड नहीं किया गया. ठीक है. सो उस रीजन में, ये रीजन में प्रोजेक्ट फेल हो गया. सो लेसन क्या है, अगर स्टेक होल्डर्स को इग्नोर करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी. ठीक है. ओके. So this is the interesting thing, the villain's formula. So this thing is the villain's formula. Villain is C equal to M plus D minus A. इसमें C क्या है, करप्शन है. हाँ, M क्या है, मोनोपोली. D मतलब डिस्क्रिशन, और A मतलब अकाउंटेबिलिटी. सो हाँ हाँ. सो करप्शन. ओके. सो what is, so do you know the meaning of corruption, monopoly, discretion, accountability and all? So I'll say the Hindi words. Corruption मतलब भ्रष्टाचार, मोनोपोली मतलब एकाधिकार, और डिस्क्रिशन मतलब विवेकाधिकार, और इसमें डिस्क्रिशन का दूसरा वर्ड है सेक्रेसी और चॉइस. और हाँ, अकाउंटेबिलिटी वी ऑलरेडी एक्सप्लेन, राइट. सो करप्शन इक्वल टू मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन माइनस अकाउंटेबिलिटी. मतलब क्या है, करप्शन इंक्रीसेस व्हेन मोनोपोली, टोटल कंट्रोल इंक्रीसेस, डिस्क्रिशन और सेक्रेसी चॉइस इंक्रीसेस, and when accountability decreases. When accountability decreases, corruption increases, right? Because there is a minus sign. So minus accountability. So accountability increases means corruption decreases. Accountability decreases means corruption increases. Opposite है ना. ठीक है. So I guess you guys are in 10th and 11th. So you know these are basic mathematics, right? So ये formula का नाम क्या है, विलियंस फॉर्मूला है. ठीक है. ओके. सो करप्शन, करप्शन बढ़ता है जब मोनोपोली पूरा कंट्रोल इंग्लिश, और डिस्क्रिशन, सीक्रेट डिसीजन पावर इंग्लिश, और अकाउंटेबिलिटी कम, कम अकाउंटेबिलिटी. ठीक है. और सॉल्यूशन क्या है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ करप्शन कम होगा. ठीक है. सो यू कैन सी द फिक्स एट द एंड. सो इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी टू डिक्रीज करप्शन. अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ करप्शन कम होगा. ठीक है. Okay. The detective shield, tools for justice. So here you can see transparency, RTI, whistleblowing, election. So these are some social things. Okay. So detective shield, tools for justice means ways to fight corruption. So what is the first way? First way is that ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई. आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन है. ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो ट्रांसपेरेंटी, राइट टू इंफॉर्मेशन है. और सेकंड वन विसिल ब्लोइंग.
विसल ब्लोइंग मतलब क्या है? एक्सपोसेस, सो ट्रांसपेरेंसी में एक्सपोसेस हिडन फाइल, सो एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल टू द सोसाइटी सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द करेक्ट थिंग. विसल ब्लोइंग मतलब क्या है? कॉलिंग आउट अनएथिकल बिहेवियर ब्रेक्स द सीक्रेसी, रिपोर्टिंग रॉन्ग एक्शन, दोस थिंग्स आर कॉल्ड विसल ब्लोइंग. और इलेक्शन, इलेक्शन मतलब क्या है? द पावर टू हायर एंड फायर लीडर्स, voting leaders in and out. So these tools should be with us. These are the shield for us. For what? Justice. So these are the weapons against the corruption formula. ठीक है. So हाँ. So tra transparency. Okay. Unethical. Unethical means अनैतिक. ठीक है. So ओके. सो करप्शन से लड़ने. ओके. सो तीन टूल्स है: ट्रांसपेरेंसी, आरटीआई, इंफॉर्मेशन पब्लिक करो, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक्सपोसेस हिडन फाइल, विसिल ब्लोइंग, गलत काम रिपोर्ट करो, दैट इज विसिल ब्लोइंग, सो दैट इज रॉन्ग. गलत काम रिपोर्ट करो इज रॉन्ग. और इलेक्शन, गलत लीडर्स को हटाओ. ठीक है. सो नहीं, गलत काम रिपोर्ट करो, दैट दैट शुड बी देयर. गलत काम शुड नॉट बी देयर. रॉन्ग थिंग शुड नॉट बी देयर. So if there is any wrong thing, we should report them. So गलत काम रिपोर्ट करो. और इलेक्शन, इलेक्शन गलत लीडर्स को हटाओ. ये सिस्टम को क्लीन रखते हैं. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंटेबिलिटी, द मैन इन द मिरर. मतलब क्या है? सो हाँ. सो there are three things here, right? So hardest suspect, internal locus of control, or court, or key tape. Four things are there. So hardest suspect, the hardest person to hold accountable is yourself. So we should hold accountable if we are the reason for that. Internal locus of control, don't blame luck on the result. Instead of the teacher failed me, say I didn't study enough. So if we fail in exam, don't say that this teacher failed me. Say that I didn't study enough. Next time I'll study more and I'll. Quote, the choices we make are ultimately our own responsibility. So the choices we make. So I I I thought of becoming an engineer, so I made this choice. So that choice, the I am the one who is responsible for that choice, right? So ये एलिनोर रूजवेल्ट का एक कोट है. ओके. एक बढ़िया वो कोट है ना? द चॉइसेस वी मेक आर अल्टीमेटली आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी. और की ट्रेट, ए जीनियस एज डिटेक्टिव doesn't make excuse, they make improvement. So we'll not say excuse. So if we, so something like, uh, okay, so if we don't do anything, don't say excuse. Instead of saying excuse, just say sorry to them, and we should make our own, mean we should improve ourselves. Okay. So the hardest person to hold accountable is yourself. Internal locus of control means they don't blame luck, take responsibility. So self reflection मतलब आत्मचिंता है. ठीक. सो सबसे मुश्किल है खुद को अकाउंटेबल बनाना. सो ब्लेम गेम मत खेलो. ये मत बोलो टीचर ने फेल कर दिया. ये मत बोलो. बोलो मैंने इनफ स्टडी नहीं नहीं किया. सो स्ट्रांग लोग एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, इम्प्रूव करते हैं. ठीक है. सो ये है हमारा की ट्रेट. सो डिटेक्टिव कोड. ओके. सो हाँ, इसमें चार रूल्स है. फर्स्ट रूल इज इंटेग्रिटी. So we are detectives in this journey, right? So this is our code in for this chapter, integrity. I will own my decisions even when no one is watching. I will own my decision even when no one is watching. So so integrity मतलब क्या है? Be honest. If no one, so if someone have watched what we did, they know what we did, right? So the problem is that we can't lie. We will automatically own our decision. But if no one is there, still we should own our decision. So what does that mean? Be honest. Courage. Courage matlab I will accept the consequences, good or bad. Even if the consequence is bad, I will accept it. That is courage. Accept consequences. Social care. I will consider how many actions affect the community. Think about others too. So social care means how our actions affect the community. मतलब thinking about others itself. Transparency मतलब क्या है? I will not hide behind I was just following orders. So don't say something like I was just following orders. Every decision we take is we are responsible for those decisions. So don't hide behind orders. So हाँ. So ठीक है.
ओके। तो इंटेग्रिटी मतलब ईमानदारी, करेज मतलब कॉन्सिक्वेंसेस एक्सेप्ट करो, सोशल केयर मतलब अपने एक्शंस का इफेक्ट सोचो, और ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या है, ऑर्डर्स के पीछे मत छुपो। और इसमें फाइनल लाइन यू कैन सी एस आई एम आंसरेबल। सो वी शुड बी आंसरेबल फॉर ऑल ऑफ आवर थिंग्स, ठीक है। सो ये हमारा फाइनल एग्जाम है। एक I am giving you a case. So you see a friend cheating on an exam graded on a curve. So you see a, one of your friends cheating on an exam. Their cheating lowers everyone else's grade, including yours. So if someone cheats and score much marks, our marks will means our grade will come down, right? So graded on a curve, matlab, uh, take it as relatively grading. So the person who have the highest mark will be the first person. So everyone's mark will be related to that person. So if one guy is cheating and he's scoring marks, all others will get affected, right? So that is the scenario. तुम्हारा फ्रेंड चीटिंग कर रहा है, उसकी चीटिंग सबके मार्क्स कम कर रहे हैं। ये है हमारा सिनेरियो। द डिलेमा, द कंफ्यूजन, लॉयल्टी, प्रोटेक्ट योर फ्रेंड इवन इफ दे थिंक दैट he or she is your best friend. Loyalty, protect your। so इसमें कंफ्यूजन क्या है, फ्रेंडशिप या फेयरनेस, ठीक है। क्वेश्चन, हु आर यू अकाउंटेबल टू, योर फ्रेंड, द क्लास, यूर सेल्फ। सो क्वेश्चन है तुम अकाउंटेबल किसको हो, फ्रेंड, क्लास या खुद को। सो ये एक रियल लाइफ टेस्ट है। सो दिस इज ए केस फॉर यू गाइस, यू गाइस सॉल्व दिस केस, ठीक है। ओके। सो हमारा केस right now it is closed. So the ultimate edge. So case closed here. Accountability is not a punishment; it is a power. When you are accountable, people trust you. Trust build teams. Teams build leaders. ठीक है. So teamwork, बाकी वगैरह. So things will come in our next classes. I'll explain about those. So when you are accountable, people trust you. Trust builds team. Teams build leaders. So final directive क्या है? Go out and be a social detective. Observe, question, take responsibility. ठीक है। सो अकाउंटेबिलिटी पनिशमेंट नहीं है, ये एक पावर है। जब तुम अकाउंटेबल होते हो, लोग तुम पर ट्रस्ट करते हैं, ट्रस्ट से टीम बनती है, और टीम से लीडर बनते हैं, ठीक है। तो फाइनल मैसेज क्या है, ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन करो, रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, ठीक है। सो हमारा दिस चैप्टर इज ओनली दिस मच, एक सिंपल चैप्टर है। So I'll just go through everything and I'll say what all things are important. And I have prepared one or two questions inside the quiz itself, so I'll explain that question. Okay. So mystery of accountability. Accountability is our topic in this thing. So what is accountability? So एक मिनट। ओके। सो अकाउंटेबिलिटी इसके दो पार्ट है। पहले पार्ट आंसरेबिलिटी और आंसरेबिलिटी है। आंसरेबिलिटी मतलब क्या है, अपने एक्शन एक्सप्लेन करना। और दूसरा पार्ट क्या है, कल्पेबिलिटी है। कल्पेबिलिटी मतलब क्या है, अगर गलती हो जाए तो कॉन्सिक्वेंसेस एक्सेप्ट करना, ठीक है। सो इसका फाइनल लाइन क्या है, काम तुमने किया तो रिजल्ट भी तुम्हारा। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब ये सेंटेंस है, काम तुमने किया तो रिजल्ट भी तुम्हारा है, ठीक है। सो ओके। सो इधर नीचे यू कैन सी डिटेक्टिव्स रूल एंड अनअकाउंटेबल सिस्टम इज ए क्राइम सीन, इज ए क्राइम विदाउट क्लूज। सो मतलब क्या है, इफ समवन इज अनअकाउंटेबल, that is a case, but the detective will not have any clue, right? If everyone is unaccountable for that. So unaccountable system is a crime scene without any clues. So ओके। सो अकाउंटेबिलिटी मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, मतलब है रिजल्ट का ऑन करना है, ठीक है। ओके। रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब काम करना, टास्क कंप्लीट करना, और अकाउंटेबिलिटी मतलब रिजल्ट के लिए जवाब देना, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और दे सकते हो, पर अकाउंटेबिलिटी किसी और को नहीं दे सकते, ठीक है। और एक एग्जांपल हम एक्सप्लेन कर दिया। और क्या है, टीचर काम असाइन करता है, पर प्रिंसिपल ओवरऑल रिजल्ट के लिए अकाउंटेबल है, ठीक है। ओके। ओके। सो
हाँ, डिटेक्टिव टूल किट, 3 ways टू जज राइट और रॉन्ग। राइट या रॉन्ग डिसाइड करने के 3 तरीके। सो पहले द स्केल, सबसे ज्यादा लोगों का फायदा हुआ क्या, वो है हमारा क्वेश्चन। सेकंड वन, रूल बुक, रूल फॉलो किया क्या। और थर्ड, द बैड्ज और वर्च्यू एथिक्स, क्या तुमने एक अच्छे कैरेक्टर वाले इंसान की तरह बिहेव किया। एक एक्शन सही है या नहीं, ये 3 एंगल से देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, ओके। सो हम किसको आंसरेबल है, हम 4 डायरेक्शन में अकाउंटेबल होते हैं। अप मतलब बॉस या सीनियर्स को, आउट मतलब लॉ और सोसाइटी को, डाउन मतलब सिटीजन या वोटर्स को, और इन मतलब अपनी कॉन्शियंस, अपनी आवाज को। ठीक है। सो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सो मेनी हैंड्स मिस्ट्री, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। प्रॉब्लम ये होती है, अगर सब रिस्पॉन्सिबल है तो कोई भी सीरियस नहीं होती। सो लोग क्राउड में चुप जाते हैं ब्लेम से बचने के लिए। सो ये है हमारा रिस्क। और सॉल्यूशन क्या है, क्लियर करो कौन इंचार्ज था और कौन लीगली रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है। ये हमारा पहला केस है, यूएस ग्रीनविल कोस्ट। और कमांडर ने पर्सनली शिप नहीं चला था, फिर भी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट किया। ठीक है। क्यों, क्योंकि वो लीडर है। ओके, ये दूसरा केस है, मैकडोनल्ड्स का केस। सो एक लेडी को बहुत गर्म कॉफी से बर्न्स हुई। कोर्ट ने कहा कंपनी लायबल है, अगर अनसेफ पॉलिसी बनाते हैं तो जवाब देना पड़ेगा। ये है हमारा लेसन। ठीक है। सो ये हमारा थर्ड केस है। क्या है, आगे, गांव वालों ने पानी की पाइप तोड़ दी। क्यों, क्योंकि उनको प्लानिंग में इंक्लूड नहीं किया गया, प्रोजेक्ट फेल हो गया। और लेसन क्या है, अगर स्टेक होल्डर्स को इग्नोर करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है। ओके, ये विलन्स फॉर्मूला और करप्शन फॉर्मूला दोनों सेम है। विलन्स फॉर्मूला क्या है, C = M+D - A, C = करप्शन, corruption equal to monopoly plus discretion माइनस अकाउंटेबिलिटी। सो करप्शन बढ़ता है जब मोनोपोली पूरा कंट्रोल, डिस्क्रिशन सीक्रेट डिसीजन पावर, और कम अकाउंटेबिलिटी। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है, करप्शन कम है, अकाउंटेबिलिटी कम है, करप्शन ज्यादा है। ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन क्या है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाओ, करप्शन कम होगा। ठीक है। ओके, टूल्स फॉर जस्टिस, द डिटेक्टिव शील्ड। करप्शन से, सो 3 टूल्स है। पहले टूल आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी, इंफॉर्मेशन पब्लिक करो। सेकंड वन विसिल ब्लोइंग है, विसिल ब्लोइंग गलत काम रिपोर्ट करो। और थर्ड वन इलेक्शन है, इलेक्शन क्या है, गलत लीडर्स को हटाओ। ठीक है। तो द मैन इन द मिरर, पर्सनल अकाउंटेबिलिटी। सो हाँ, सो सबसे मुश्किल है खुद को अकाउंटेबल बनाना। ठीक है। सो ब्लेम गेम मत खेलो, ब्लेम गेम इज नॉट गुड, ब्लेम गेम मत खेलो। और ये मत बोलो टीचर ने फेल किया, फीचर टीचर ने फेल कर दिया। बोलो मैंने इनफ स्टडी नहीं किया। ठीक है। और स्ट्रांग लोग एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, इम्प्रूव करते हैं। ठीक है। और एलेनोर रूसवेल्ट का एक कोट था इधर, द चॉइसेस वी मेक आर अल्टीमेटली आवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। सो क्या है हमारे डिटेक्टिव्स का कोड, 4 रूल्स है। पहले रूल इंटेग्रिटी है, इंटेग्रिटी मतलब क्या है, ईमानदारी है। और दूसरा कोड क्या है, करेज है, करेज मतलब कॉन्सिक्वेंसेस एक्सेप्ट करो। थर्ड वन, तीसरा कोड सोशल केयर है, सोशल केयर मतलब अपने एक्शंस का इफेक्ट सोचो। और फोर्थ वन ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी मतलब ऑर्डर्स के पीछे मत छुपो। ठीक है। और क्या है हमारा लेसन, आई एम आंसरेबल फॉर एवरीथिंग। ठीक है। फाइनल एग्जाम, यू सॉल्व द केस। सो ये एक टास्क है, तुम्हारे फ्रेंड चीटिंग कर रहे हैं, उसकी चीटिंग सबके मार्क्स कम कर रही है। सो इधर कंफ्यूजन क्या है, फ्रेंडशिप या फेयरनेस। सो क्वेश्चन मतलब तुम अकाउंटेबल किसको हो, ये क्वेश्चन का आंसर यू गाइस गिव। ठीक है। सो तुम अकाउंटेबल किसको हो, फ्रेंड को, क्लास को, या खुद को। ठीक है। सो ये एक रियल लाइफ टेस्ट है ना। ठीक है। सो हमारा केस इज क्लोज्ड, ये एक छोटा छोटा चैप्टर है, बिकॉज ओनली अकाउंटेबिलिटी इज देयर, सो इट इज समवट इजी। सो अकाउंटेबिलिटी पनिशमेंट नहीं है,
ये एक पावर है। जब तुम अकाउंटेबल होते हो लोग तुम पर ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट से टीम बनती है और टीम से लीडर बनते हैं। ठीक है। सो फाइनल मैसेज क्या है? ये चैप्टर का फाइनल मैसेज: ऑब्जर्व करो, क्वेश्चन करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ठीक है। सो इन दैट क्वेश्चन थिंग, आई हैव टू क्वेश्चन, सो we'll discuss that too. ठीक है। Okay. Did you guys understand the chapter? यस सर। Okay, ठीक है। If you guys have any doubt, you can ask. Okay. Okay. So, okay. So in this thing, I'll explain. Completed. और हाँ, okay. So एक मिनट। Slides. In the slides we have seen some words. Some थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है इस स्लाइड में। एक डियोंटोलॉजिकल है। डियोंटोलॉजिकल एक एथिकल थियरी है। जो कहती है कि एक्शन सही या गलत होता है रूल्स और ड्यूटी के बेसिस पर, ना ना कि रिजल्ट के बेसिस पर। मतलब रूल फॉलो करो चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। एक एग्जाम्पल है, अगर झूठ बोलने से किसी का फायदा हो सकता है, फिर भी डियोंटोलॉजी कहता है झूठ मत बोल क्योंकि झूठ बोलना रूल के अगेंस्ट है। ठीक है। वो है डियोंटोलॉजी। और यूटिलिटेरियन मतलब, वो वर्कशीट में क्वेश्चंस है ये टॉपिक्स का। मींस बेस्ड दिस टॉपिक्स देयर आर सम क्वेश्चन। सो हाँ, just try to remember, means try to understand the meanings of those words. Utilitarian भी आइडिया है जो कहता है जो एक्शन सबसे ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा बेनिफिट दे वही सही है। मतलब फोकस रिजल्ट कॉन्सिक्वेंसेस पर होता है, रूल्स पर नहीं। एक सिंपल एग्जांपल है, अगर एक डिसीजन से 100 लोग खुश होते हैं और 5 लोग अनहैप्पी है, तो यूटिलिटेरियन व्यू कहता है वो डिसीजन सही है क्योंकि मेजोरिटी को फायदा हुआ। ठीक है। मेन आइडिया क्या है? फोकस कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम फोकस करो, और मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल। रिजल्ट्स मैटर मोर देन व्हाट इंटेंशन। ठीक है। और if you guys look at the fifth, sixth, seventh questions and all, these questions are related to these topics. ठीक है। just go through the questions after some time. ठीक है। वर्च्यू एथिक्स का एक एथिकल थियरी भी है। जस्ट लाइक डियोंटोलॉजिकल, वर्च्यू एथिक्स भी एक एथिकल थियरी है जो कहते हैं एक्शन सही या गलत होने से पहले ये देखो कि तुम कैसे इंसान बन रहे हो। मतलब फोकस कैरेक्टर, व्यक्तित्व पर होता है, ना सिर्फ रूल्स पर जैसे डेंटोलॉजी, और ना सिर्फ रिजल्ट पर जैसे यूटिलिटेरियनिज्म। और मेन आइडिया फोकस ऑन विर्च्यूज। विर्च्यू विर्च्यू एथिक है ना, विर्च्यू मतलब क्या है? गुड क्वालिटीज। एक अच्छा इंसान क्या करेगा, दैट इज व्हाट विर्च्यू एथिक, द बैड। वी आर डिटेक्टिव्स इन दिस केस एंड डिटेक्टिव आर द बैड। व्हाट will that detective badge do? Detective badge gives us that our, it shows our character, right? What we are, what are we doing. That is the same thing here. Focus on your character और virtue मतलब अच्छा qualities। ठीक है। कैरेक्टर विल गिव रूल्स, रूल्स विल गिव रिजल्ट्स। ठीक है। एक एग्जांपल है, अगर तुम सच बोलते हो सिर्फ रूल की वजह से, डियोंटोलॉजी, अगर तुम सच बोलते हो क्योंकि उसे वेजिटेरियनिज्म है, और अगर तुम सच बोलते हो क्योंकि तुम हॉनेस्ट इंसान बनना चाहते हो, ये विर्च्यू एथिक्स है। ठीक है। विर्च्यू मतलब गुण, गुण है। ठीक है। ओके। इसमें एक क्वेश्चन है।
सो इसमें क्वेश्चन है, ये 14th क्वेश्चन देखो। अकॉर्डिंग टू विलियंस फॉर्मूला, C इक्वल टू M प्लस D माइनस A, increasing A will dash, increasing A will dash. So increasing A, so A have minus sign here, right? A have minus sign here. Minus मतलब क्या है? Increasing A will decrease C, decreasing A will increase C. C मतलब करप्शन है, A अकाउंटेबिलिटी है, M मोनोपोली और D डिस्क्रिशन है, ठीक है। और increasing A will do what? Increasing A will decrease the corruption, ठीक है। A have nothing to do with monopoly and discretion. So A, if we increase A, corruption will also increase. If we decrease A, corruption will also decrease. तो बाकी क्वेश्चंस यू गाइस डू, बाकी पूरा इसी क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, सो 1 minute, just wait for a minute. Okay, so this chapter was about accountability and social ethics. So we already studied about advanced communication, leadership, team dynamics. You already studied because I guess Avinish took these topics, and conflict resolution. I took the topic. Bias and perspective taking we took in the last class, and I guess I have already uploaded the question for that too. So try doing those questions. I guess वो थोड़ा difficult है, but still. आई गेस यू कैन डू इट। और ये एक सिंपल टॉपिक है, अकाउंटेबिलिटी एंड सोशल एथिक्स, ठीक है। सो बाकी क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है। ओके, सो दैट्स इट। ओके, आई थिंक everyone can leave the meeting. Okay, so today's was a simple topic, so that's it. Okay. If you guys have any doubt, you can ask. I'll be here itself. So otherwise, you can leave the meeting. Okay. Abhishek, Bhagyashree, Naneshwar, class is over. Okay. So if you guys have anything. Yes, sir. Class is over. You guys can leave. If you guys have if you don't have any doubt, you can leave. Okay.